So let's read conjunctivitis. So यहाँ से रिज्यूम करते हैं हम लोग. So infectious or infective conjunctivitis. So what is it? Based on clinical presentation, the chief form of infective conjunctivitis may be divided into two broad groups. क्या क्या? Acute conjunctivitis and chronic conjunctivitis होता है. Acute conjunctivitis क्या होता है? Resolving in less than 4 weeks. 4 weeks से पहले खत्म हो जाए. Hi मम्मी. Resolving in less than 4 weeks may be further classified based on the type of discharge. जैसे कि म्यूकॉइड, म्यूकोपुरुलेंट, कंजक्टिवल रिएक्शन, फॉलिकुलर और पैपिलरी. देन और ईटियोलॉजी, बैक्टीरियल है, वायरल है, क्लमाइडियल है या फंगल है. ठीक है. नाउ क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? सो इट इज ऑफ मोर देन 4 weeks. मम्मी तो शैडो पड़ रहा है, शैडो पड़ रहा है, शैडो पीछे चल गया ना. तो आराम से क्या पता है. हाँ. तो क्या होता है क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस? जो 4 week से ज़्यादा का हो. इंक्लूड इन्फ्लामेटरी कंजक्टिवाइटिस, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, and some type of follicular conjunctivitis including trachoma granulomatous conjunctivitis. Now neonatal conjunctivitis क्या होता है? या फिर ophthalmia neonatum. अच्छा. Yeah. So ophthalmia neonatum क्या होता है? Includes a limited spectrum of acute conjunctivitis and is dealt with separately. So acute conjunctivitis में क्या आता है? Bacterial conjunctivitis. Typically characterized as acute purulent mucopurulent conjunctivitis. Causative organism क्या होता है? So mucopurulent and purulent conjunctivitis may be caused by a number of bacteria and is contagious, being transmitted directly by discharge. Mucopurulent conjunctivitis also accompanies some viral infection in exanthemata such as measles, conjunctivital fever. The clinical presentation depends upon the virulence and pathogenicity of the organism and the host immune response. ठीक है. Among the most common etiological organism is Staph aureus, which may also be responsible for other associated conditions such as blepharitis and eczema. Or impetigo of the skin. So Staphylococci are gram-positive toxin-producing organisms whose pathogenicity is proportionate to their coagulase activity. जितने ज़्यादा coagulase activity होता है उतना ज़्यादा pathogenic होता है. The important feature and treatment guideline for different type of conjunctivitis are summarized in table basis. ठीक है. नाउ क्लिनिकल फीचर क्या होता है? जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है उसका, इट इज़ अ माइल्डर फॉर्म एंड इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टाइवा assumes the characteristic of a typical catarrhal inflammation of the mucous membrane. The picture of hyperemia is associated with mucus discharge with gum-like lids together, particularly in the margins because of accumulation during the night. मॉर्निंग में होता है क्योंकि accumulate कर जाता है during night. In more severe cases, the whole conjunctiva becomes
fiery red, pink red हो जाता है पूरा conjunctiva. All the conjunctival vessels are congested, a phenomenon less marked in the circumcorneal zone. Flakes of mucopus and eventually pus are seen in the fornicles and often on the margins of the lids, mating the lashes together with dirty yellow crust. मतलब चिपक जाता है पूरा आँख, इसका यही है. पिंक होता है कंजक्टाइवा पूरा, फियरी रेड, पिंक आई बोलते हैं, और पूरा चिपकेगा ये. Flakes of mucus passing along the cornea uh, may give rise to colored halos owing to their prismatic action. The halos must be carefully distinguished from those seen in glaucoma. ठीक है. कलर्ड हैलोस जो होता है वो 3 कंडीशन में हो सकता है, कैटरैक्ट, ग्लाकोमा और ये कंजक्टिवाइटिस. तो डिफरेंशिएट कर लेना कि किस वजह से हो रखा है. ठीक है. The presence of purulent या फिर mucopurulent discharge is suggestive of bacterial infection and is usually not possible to make a diagnosis of the organism clinically. मतलब बेसिकली पुरुलेट या ब्रोकोपुरुलेट डिस्चार्ज हो रहा है जो आँख पूरा चिपक रहा है, तो उससे पता चल सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है, पर डायग्नोसिस नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है. So, however, certain clinical features do indicate an increased likelihood to certain specific infections. For example, there is usually more edema, chemosis ज़्यादा होगा, small ecchymosis and a membranous film या फिर pseudo membrane होगा इन pneumococcal conjunctivitis में. ठीक है. Iritis is a rare sequel of the conjunctivitis except in pneumococcal conjunctivitis. Now, if the cornea is involved, a hypopyon ulcer may develop. Now, particularly severe form of acute purulent congestive is one due to Neisseria gonorrhoeae. It is associated with moderate to severe pain. पेन करेगा कंजक्टिवाइटिस में, एंड लिड का स्वेलिंग हो जाएगा विथ कोपियस पुरुलेंट डिस्चार्ज एंड टेंडर समटाइम्स सुपुरेटिव प्री ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी तो होगा ही होगा नीजेरिया गोनोरिया में. इन टिपिकल केसेस द डिस्चार्ज रीअक्यूमुलेट्स विद इन द सेकेंड्स ऑफ क्लीनिंग. ठीक है, क्लीन किए और सेकेंड्स के बाद वो फिर से डिस्चार्ज वहाँ पे आ गया. This form of conjunctivitis is also known as hyperacute conjunctivitis or acute um, blenouria by some. So, gonococcal conjunctivitis occurs in two forms as ophthalmia. जो gonococcal conjunctivitis है ना नीजेरिया गोनोरिया से, वो ophthalmia neonatum होता है in newborn baby. क्लमाइडिया का नहीं होता था थैलमिया नियोनेटम, क्लमाइडिया पेटोमेटिस का होता है. आई डोंट नो. ये बोल रहा है नीजेरिया गोनोरिया का थैलमिया नियोनेटम होता है न्यूबॉर्न बेबी एंड एज सीवियर पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस in adults. Apart from Neisseria gonorrhea, infection with Neisseria meningitis, Staph aureus, Streptococcus species, especially beta hemolyticus streptococci and Haemophilus aegypticus and enteric gram negative bacilli can also present in this manner. Hi guys. So
कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो द डिजीज रीचेस इट्स पीक इन 3 और 4 days, 3 से 4 दिन के अंदर डिजीज जो है पीक में रीच कर जाता है. If mild or and untreated or partially treated, it is liable to pass into a less intense chronic condition. Complications are rare, but aberration of the cornea are liable to become infected and to give rise to ulcer. Occasionally, marginal ulcer from the superficial keratitis may develop. कॉर्निया का एब्रेशन हो सकता है, इन्फेक्टेड हो जाएगा, अल्सर हो सकता है, मार्जिनल अल्सर, सुपरफिशियल केराटाइटिस, ये सब हो सकता है. ओके, ये सब कॉम्प्लिकेशन है. नाउ लेट्स सी मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इंक्लूड्स relevant investigations and treatment. In the diagnosis of conjunctivitis, bacteriological investigation can be supplemented by histological examination of the secretion and of scrapings of the palpebral conjunctival epithelium taken by a flame sterilized platinum loop. A disposable sterile blade, platinum loop लेंगे. So histological examination of secretion and scrapings of the palpebral conjunctiva का स्क्रेपिंग लेंगे. देन उसके बाद एक प्लैटिनम लूप लेंगे, स्टेराइल ब्लेड लेंगे, सेलुलोज का स्पॉन्ज लेंगे, कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर या फिर लेंगे. देन स्टेन विथ ग्राम जिम्सा एंड पैपिनोकोलू for cytological examination when needed. Apart from the presence of bacteria or inclusion body in the cells, the cytological picture provides useful information regarding the nature and inflammatory cells in specific infection. So, treatment includes the following. Topical drugs. So, control of infection is most effectively achieved by the use of antibiotic drops. So, ideally, the appropriate drug should be chosen after test of bacterial sensitivity have been undertaken. Clinically, a broad spectrum antibiotics such as chloramphenicol, levofloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin, or azithromycin in a frequency of 4 to 6 tabs. Broad spectrum antibiotic देना है. 4 to 6 times a day is prescribed empirically. So an antibiotic ointment is So an antibiotic ointment is applied by expressing a small quantity directly into the lower fornix and is smeared along the lids at bedtime, or in the case of children as of 10 as they are put to sleep. As often as they are put to sleep. It prevents the lid from sticking together, twofold benefits of preventing discharge from being retained and obvious pain on opening them. With control of the infection by antibiotics, the pain, redness, discharge, and other signs of inflammation starts resolving. Topical steroid medication to hasten resolution should not be used in infectious conjunctivitis.
Topical tear substitute can be prescribed as lubricants to alleviate the foreign body sensation and wash out the inflammatory mediators. After an attack of mucopurulent conjunctivitis, the conjunctiva generally returns to normal if the case has been neglected and chronic inflammatory signs persist. Treatment should be the same as that of chronic conjunctivitis. Systemic medication. So, systemic medications are rarely required. Oral analgesic, anti inflammatory medication, or antibiotics are only indicated for systemic features such as pyrexia, fever, होने लग गया, sore throat, as in the case of conjunctival fever, and there is severe accompanying preseptal cellulitis. Now, supportive management. The eye should not be bandaged as this prevents drainage of the secretion. But if there is any discomfort in bright light, a sunshade and or dark goggles should be worn. Because the disease is contagious, care must be taken to prevent its spread. Patient must keep his hands clean and no one else should be allowed to use his towel, handkerchief, pillow or other fomites. Now bacterial खत्म हो गया. अब now let's move on to chlamydial conjunctivitis. Now chlamydia is also a bacteria, but it is special. STD होता है और इसमें कुछ जो फीचर्स होते हैं अलग होते हैं, इसलिए इसको अलग से ले लिया गया. और ट्रैकोमा जो होता है ना, इस क्लामाइडिया में एक्चुअली 3 चीज़ होता है. एक होता है इंसीडियस करके, एक होता है, दूसरा ट्रैकोमैटिस होता है और तीसरा होता है नियोनेट्रम, बच्चों को जो होता है. सो ट्रैकोमैटिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है. So let's read. So causative organism क्या है? Chlamydia trachomatis है. Is the bacterium serotype D to K causes acute inclusion conjunctivitis. इसी के बारे में बोल रही थी. And serovar ABC causes chronic form of conjunctivitis known as trachoma. तो trachoma serovar क्या होता है? ABC. Hi Shank, hi. So हम लोग काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं and you were not there. सो क्लामाइडिया के बारे में पढ़ रहे. क्लामाइडिया का जो ट्रैकोमा जो होता है उसका क्या होता है? सीरो वैरायटी ABC. ठीक है. सो ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो क्लामाइडिया इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस जो होता है इज जनरली स्प्रेड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन फ्रॉम जेनाइटल रिजर्वॉयर ऑफ द इन्फेक्शन. थैंक यू. सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. अरे पता है मेरा वीडियो जो शुरू हुआ था ना उसमें वॉइस मेरा बंद था, मुझे नहीं पता था और हम इतने देर से पूरा पढ़ लिए. मेरा अभी तुरंत मैंने वॉइस खोला है. So now the primary source of infection is being subclinical venereal disease producing a mild urethritis in the male and cervicitis in the female. ठीक है. In adult, the organism may be transferred from the genitals by the finger, but a common mode of infection is through water in swimming pool. समझे? बहुत पानी में ये करते हो ना, स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हो तो क्या होता है कि जिसको क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस हो रखा है, मान लो उस इंसान को अक्यूट इंक्लूशन मतलब क्लामाइडिया हो रखा है, तो उसके जेनाइटल्स से जो सेक्रीशन है वो पानी में जाएगा और उससे अगर मुंह घुसाओगे तो आँख के थ्रू वो कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है या फिर क्लामाइडिया भी हो सकता. क्लामाइडिया तो नहीं होगा, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, अक्यूट इंक्लूशन कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा.
क्लामाइडिया होने के लिए एसटीडी होना चाहिए. सो स्विमिंग दस द डिजीज में अकर इन लोकल एपिडेमिक, जैसे स्विमिंग पूल कंजक्टिवाइटिस जिसको कहते हैं. किससे होता है? क्लामाइडिया ट्रेकोमैटिस के साथ. Now it is also commonly transmitted from the mother to the newborn when follicle formation is less evident. Mother से newborn में भी transmitted होता है. Now clinical features क्या है? Inclusion conjunctivitis is characteristically acute at onset. ठीक है. The incubation period varies from 5 to 10 days. The follicular hypertrophy is always more prominent in the lower lid than in the upper. सो लोअर लिड में ज़्यादा प्रोमिनेंट है. अपर में क्या प्रोमिनेंट था? मैंने पढ़ा था अपर वाले लिड में निजेरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन आई गेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. follicles देखने को मिलता. Although in acute cases the follicle may be partially obstructed by papillary hypertrophy. Okay, so the exudate composed principally of neutrophil may be moderately abundant. The cornea is involved in a superficial punctate keratitis occasionally with some pannus like peripheral vascularization. Okay, so आगे पढ़ते हैं. Note: Chlamydia trachomatis is common in the developing and developed world, causing various genital and oculogenital infections. Associations have been reported with non-gonococcal and post-gonococcal urethritis, cervicitis, salpingitis, epididymitis, Bartholinitis, and Retter's disease. Approximately half of the cases of reactive inflammatory arthritis occurring as a sequel to sexually acquired non-gonococcal genital tract infection are associated with chlamydia trachomatis. Chlamydial urethritis and chlamydial cervicitis are the commonest venereal disease in the UK and the US. Investigation. So the diagnosis is made by a direct immunofluorescent stain of smear using a monoclonal antibodies. The test is reported to have 100% sensitivity. सेंसिटिविटी मतलब पता है, मैंने ऐसे याद किया था. सेंस बना रहा है. सेंस क्या बना रहा है? यानी पॉजिटिव केसेस को पॉजिटिव दिखाएगा. यानी 100% पॉजिटिव होने का मतलब है कि जितने पॉजिटिव है सारे के सारे को पॉजिटिव ही बताएगा. और 94% स्पेसिफिसिटी, यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव बताना इज स्पेसिफिसिटी. ये मैंने सीख लिया. पता है मुझे नहीं याद होता था, अब मुझे हो गया. फॉर क्लामाइडिया the results are available immediately. So whenever possible, cervical or urethral specimen should be obtained in addition to the conjunctival smear. मतलब केवल कंजक्टिवल स्मीयर के साथ नहीं, और सर्वाइकल स्मीयर भी ले लेना है, स्पेसिमेन ले लेना है. Other available tests include nucleic acid amplification test using PCR, nucleic acid hybridization test using DNA probe, enzyme-linked immunosorbent assay, GIMSA staining by conjunctival scraping, McCoy cell culture. Now management. So the disease runs a relatively benign course, healing spontaneously if untreated in 3 to 12 months. So the organism, however, is very responsible to treatment with broad spectrum antibiotics. Treatment include topical tetracycline eye ointment. टेट्रासाइक्लिन देते हैं, ठीक है. क्लमाइडिया में क्या देंगे? टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट 2 to 3 times a day, और अजीथ्रोमाइसिन दे देंगे आई ड्रॉप. मम्मी मम्मी टैबलेट 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 खा लो. हाँ खाओ.
albendazole. Azithromycin eye drop 4 times a day for 2 weeks. Systemic treatment of associated systemic genitourinary or respiratory infection by tetracycline 250 mg. Uh, at 6 hourly intervals for 14 days, or 100 mg doxycycline 12 hourly for 14 days, or erythromycin 250 mg 12 hourly for 14 days. Now, oral tetracycline and doxycycline are not recommended for young children and lactating mother. So, हाँ, तो फिर क्या है कि ये सब देख सकते हैं। तो ओरल टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो रिकमेंड नहीं किया हुआ है, किसके लिए? यंग चिल्ड्रन के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए। क्या नहीं देना है यंग चिल्ड्रन लैक्टेटिंग मदर को? टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। सुन लो शशांक, जैसे कंजक्टिवाइटिस लेके आएगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब क्लमाइडिया के साथ, तो उसको डॉक्सी और टेट्रा मत चला दे प्रेग्नेंट औरत को और छोटे बच्चों को। And in these situations, alternative drug including azithromycin chalana hai, administered as a single oral dose, or ofloxacin chalana hai for 7 days. Now, viral conjunctivitis पढ़ लेते. तो viral infection usually causes a serous or clear watery discharge. ठीक है, and further characterized by type of conjunctival infection, inflammatory reaction they produce. In addition, many systemic viral illness such as influenza, mumps, measles, chickenpox can be accompanied by a non-specific conjunctivitis. The underlying systemic viral disease is treated as usual, supplemented with artificial tears 4 to 8 times a day for the eye. Now we have artificial tears भी देना viral conjunctivitis में. Now we have follicular conjunctivitis. So the conjunctival reaction is most commonly caused by virus, for particularly herpes and adenovirus. ठीक है. Now, isolated follicles, however, may occur particularly in the lower conjunctiva. In any conjunctivitis of long standing and prolonged topical use of some medication. Differential diagnosis क्या है? Follicular conjunctivitis can be acute follicular conjunctivitis which occurs due to different causes, namely chlamydial inclusion conjunctivitis,
समथिंग समथिंग। अच्छा, अब हम कल पढ़ते हैं क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है। थैंक यू, बाय गाइस, आई एम गोइंग टू स्लीप। सॉरी मम्मी, अब हम